In the name of Allah, who is the Lord, the Creator, the Protector, the First, the Last, the Omniscient, the Omnipotent, and the Sustainer of the whole universe. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you will be fine with the best state of your health and faith. Today we are going to start the first unit of your textbook, which is Responsibilities of Youth. But before going to discuss that, I'm going to tell you the objectives of our today's e-lesson. After watching today's lesson, you will understand the text, its meaning, translate it into Urdu, and you will also be able to comprehend the central idea of the paragraphs as well. So let's talk about the first unit of your textbook, Responsibilities of Youth. Dear students, this unit is actually extracted, copied or selected from the speech of Quaid-e-Azam M.A Jinnah, which he delivered on the convocation of Dhaka University on 24th of March 1948. So let's discuss. Mr. Chancellor, ladies and gentlemen, when I was approached by the Vice Chancellor with a request to deliver the convocation address, Mr. Chancellor, ख़वातीन और हज़रात, जब मुझसे चांसलर ने कन्वोकेशन में खुतबा देने की दरख्वास्त की, I made it clear to him, तो मैंने ये उन पर वाज़े कर दिया that there were so many calls on me that I could not possibly prepare a formal convocation address on an academic level with regard to the great subjects with which university deals, such as arts, history, philosophy, science, law, and so on. कि मुझसे बहुत से लोगों ने रब्ता किया और कहा कि अब तालीमी मौका पर कन्वोकेशन का बाकायदा खिताब तैयार नहीं कर सकते ऐसे अजीम मज़ामीन को जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं, जैसा कि आर्ट्स, तारीख़, फ़लसफ़ा, साइंस और क़ानून. I did, however, promise to say a few words to the students on this occasion. ताहम मैंने इस मौका पर तलबा से कुछ अल्फाज कहने का वादा किया था, and it is in fulfillment of that promise that I will address you now. और ये उस वादे की तकमील है कि मैं आपसे मुखातिब होऊंगा. Muhammad Ali Jinnah further said, First of all, let me thank the Vice Chancellor for the flattering terms in which he referred to me. सबसे पहले मैं मुअद्दिबाना शराइत पर वाइस चांसलर का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसमें उन्होंने मुझे हवाला दिया है. Mr. Vice Chancellor, whatever I am and whatever I have been able to, I have done it merely as a measure of duty which is incumbent upon every Muslim to serve his people honestly and selfishly. Mr. Vice Chancellor, मैं जो भी हूँ और मैं जो कुछ भी कर सका हूँ, मैंने महज फ़र्ज़ के एक ऐसे इक़दाम के तौर पर अंजाम दिया है जो कि हर मुसलमान को अपने लोगों को की ईमानदारी और बेलौस खिदमत की ज़िम्मेदारी है. In addressing you, I'm not here speaking to you as a head of the state, but as a friend and as one who has always held you in affection. आपको मुखातिब करने के लिए मैं यहाँ आपसे एक रियासत के सरबराह की हैसियत से नहीं बल्कि एक दोस्त की हैसियत से, बल्कि एक ऐसे शख्स की हैसियत से बात कर रहा हूँ जिसने आपको हमेशा प्यार में रखा है, शफ़क़त में रखा है. Many of you have today got your diplomas and degrees and I congratulate you. आप में से बहुत सारे लोगों ने आज अपने डिप्लोमा और डिग्रियाँ हासिल की और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ. Just as you have won the laurels in your university and qualified yourself, so I wish you all success in the wider and larger world that you will enter. जिस तरह आपने अपनी यूनिवर्सिटी में एज़ाज़ हासिल करके अपने आप को अहल बना लिया है, इसी तरह मेरी ख्वाहिश है कि आप वसी तर वसी दुनिया में कामयाबी हासिल करें जिसमें अब दाखिल होंगे. Many of you have come to the end of your scholastic career and stand at the threshold of life. आप में से बहुत से लोग अपने तालीमी कैरियर के अख्तिताम पर पहुंच चुके हैं और ज़िंदगी की दहलीज पर खड़े हैं. Unlike your predecessors,
You fortunately leave this university to enter life under a sovereign, independent state of your own. अपने आबा अजदाद के बरक्स आप खुशकिस्मती से इस यूनिवर्सिटी को खुद मुख्तार रियासत के मातहत ज़िंदगी गुजारने के लिए छोड़ देंगे. It is necessary that you and your other fellow students fully understand the implication of the revolutionary change that took place on the birth of Pakistan. ये ज़रूरी है कि आप और आपके दूसरे साथी तलबा पाकिस्तान की पैदाइश के वक्त पेश आने वाले इनकलाबी तब्दीली के मुज़मरात को पूरी तरह समझें. We have broken the shackles of slavery. We are now a free people. हमने ग़ुलामी के बेड़िया हथकड़ियाँ तोड़ दी है और अब हम आज़ाद लोग हैं. Our state is our own. हमारा रियासत अपना है. Our government is our own government of the people. हमारी हुकूमत सिर्फ हमारी हुकूमत है, अवाम की हुकूमत है. Responsible to the people of the state and working for the good of the state. रियासत के अवाम के लिए ज़िम्मेदारी और रियासत के लिए भलाई का काम करेंगे. Dear students, the unfamiliar words which you learn in today's lesson, that is approached. Approach means contacted, accessed, rabta karna. Convocation. Convocation means a ceremonial assembly of members of college or university. Address. Address means khutbah. Flattering. Flattering here means expressing respect or admiration. Incumbent. Incumbent here means obligatory, aham, zaruri. Affection. Affection here means adoration, love, shafqat, pyar. Laurels. Laurels here means ezaz. Threshold. Threshold means boundary, point of beginning, dehliz. Predecessors. Predecessor means forefathers, aba wajdad. Implications. Implication means muzmirat, difficulties. Revolutionary means inqilabi. Shakel means belia, hatkadiya. Dear students, hope you understand the text and its meaning as well. It's enough for today. Thank you and have a blessed day.